Good morning, students. I hope you all are doing well at your places, and today we'll be studying about pronouns. As we all know, before starting with pronouns, I would like to revise once again about noun. What is a noun? Noun is the name of a person, place, animal, and thing, right? Whereas pronouns, they are those words that are used in place of nouns in order to avoid the repetition of nouns. So let's just begin. Title of our chapter is pronoun, right? So what are pronouns? These are those words that are used in place of nouns so that to avoid the repetition of nouns. I have already told you, Vinita plays cricket. Vinita क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं. अब विनीत की जगह ही आ गया है. What is he? He is a pronoun that is used for a male, right? Tina bought some apples. Tina कुछ apples लेके आई है. She want to distribute them to children. बच्चों को distribute करना चाहती है. We are talking about Tina. She is a female entity. That is why she is used. Okay. So above sentences में he refers to Vineet, whereas she refers to Tina, and them refers to what? The apple, right? So the nouns for which a pronoun is used, nouns जो हैं for which जिसमें pronoun use होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Antecedent बोलते हैं. Vineet is antecedent for he, whereas Tina is the antecedent for she, and apple is the antecedent for them. Right? So what is an antecedent? Antecedent, the noun for which a pronoun is used. वो वाला noun जिसके लिए pronoun use किया गया है उसको हम क्या बोलते हैं? Antecedent बोलते हैं. Antecedent मतलब जो पीछे आता है. What are the kinds of pronouns? First, we'll be studying about personal pronouns, right? Then it's possessive, then reflexive, then emphatic, then demonstrative, interrogative, distributive, relative, reciprocal, and indefinite. So let's just begin with the personal and possessive pronouns. देखिए personal pronouns क्या होते हैं जो हम लोग अपने लिए use कर सकते हैं. They are used in place of a name of a people and things. Personal pronoun, अगर personal pronoun is the doer of the action, मतलब जो action करने वाला है वो इंसान है, that is the subject of the sentence, then it is known as a subject pronoun, right? And if a pronoun, अगर pronoun ही receive कर ले उस action को which is done by that subject, then it is called the object of the pronoun, right? So they liked her very much. They क्या है? Subject. और pronoun क्या है? ये क्या है? They subject pronoun है और her क्या है? Object pronoun है. ये उनको बहुत पसंद करते हैं. Possessive pronouns जो होते हैं they basically shows the belongingness. They tells us कि what or which thing जो होती है वो हमको belong करती है. We bought two hats, हम लोग दो hats लेके आए, and the blue one is Meena and the pink one is mine. Pink वाली मेरी है, blue वाली मीना की. Possessive adjective जो होता है it is placed before a noun, while possessive pronoun जो होता है it is used मतलब it is used in place of a noun. This is very clear. Pronouns ही तो nouns की तरफ use होते हैं, nouns को हटा के, और adjective ही noun के पहले use होते हैं, right? This is not my bag, ये मेरा नहीं है, मेरा कौन से कलर का है? Blue कलर का है. Mine is blue. So my is possessive adjective, whereas mine is a possessive pronoun क्योंकि वो हमने अपने लिए use किया है. Next is there is no apostrophe s is used with possessive because if you will use the apostrophe, then you will be considered as non-living. So we know that there are three persons. First person जिससे हम बात कर रहे हैं, who is speaking, जो हम बोल रहे हैं. Second person जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे आपकी बात हो रही है. And third person is the person जिसके बारे में आप हम दोनों किसी थर्ड बंदे के बारे में बात कर रहे हैं. Personal pronouns and possessive pronouns, they refer to these three persons, and these three genders are masculine, feminine, and neutral. Right now, देयर इज अ पर्सन जेंडर, और उसमें हम कैसे हम सब्जेक्ट प्रोनाउन लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट और उसका पोजेसिव केस. देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए यूज होता है. अगर वो सिंगुलर है तो वो दोनों के लिए यूज होगा, मैस्कुलर और फेमिनाइन के लिए. जैसे आई का मी और फिर क्या हो जाता है? माइन हो जाता है. दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड ऑल लर्न इट बाय हार्ट. देखिए पहले यही देखिए, वी का अस और फिर आर्स होता है. यू का यू और योर्स ही रहता है. अगेन यू का फॉर सेम रहता है. अब कैसे सेम रहता है? देखिए अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा तो ये मैस्कुलर और फेमिनाइन होगा, ऑब्वियस सी बात है. अगर सेकंड पर्सन सिंगुलर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम मैस्कुलर और फेमिनाइन के बारे में ही बात करेंगे. सिमिलरली सेकंड पर्सन के बात करेंगे अगर वो प्लूरल होगा, अगेन वो मैस्कुलर, क्योंकि लड़का लड़की ही तो बात होंगे. बट अगर सेकंड थर्ड पर्सन आपका सिंगुलर हो जाएगा तो इट इज always used for masculine, right? Whereas second person singular होगा तो it is used for feminine, and second person singular होगा then it is used for neutral. Very important. This one is important, right? और second person plural होगा then it is used for all three. That is they, them, and theirs, right? Similarly यहाँ पे its, क्योंकि यहाँ पे चीजों के बारे में बात कर रहे हैं इसीलिए ये neutral है, right?
क्योंकि न्यूट्रल चीजों के लिए यूज होता है। बाकी शी का हर होता है और हर्स होता है, और ही का हिम और हिज होता है। Next is the pronoun can also be used to fill and empty the subject which refers to no antecedent. जैसे कि it's a very humid today, it might rain, and in these sentences it does not refers to any particular pronoun. And on behalf of this, you have to complete the sentences like we have to fill the correct pronouns कि आपको कौन से correct pronoun भरने हैं, right? देखिए एक बात ध्यान रखिए, it was dash who broke the window. It was हम दोनों बात कर रहे हैं, it was he जिसने क्या किया, विंडो को ब्रोक किया. Similarly, you can complete all these exercises on your own. Now, moving on to what? Moving on to reflexive and emphasizing. Emphasize मतलब किसी पे जोर डालना, और reflexive ये दोनों होती हैं, इनकी अपनी अपनी फॉर्म है. Myself, herself, yourself, himself, themselves, herself, itself, ये सब क्या है? Reflexive और emphasizing pronouns हैं. For example, reflexive pronouns they are used when we refer back to the subject. अगर हम subject के बारे में बात कर रहे हैं, right? जैसे कि आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को अपने आप मिरर में देखा. द स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम देमसेल्फ, खुद से सॉल्व कर ली. दिस इज emphasize करा है आपने, राइट. Emphatic pronouns they are used to emphasize the action of the subject. किसने उसके एक्शन को जोर, उस पर जोर दिया जाता है. they have same forms as reflexive, दोनों सेम ही होते हैं. I close the door myself, मैंने अपना डोर खुद से क्लोज किया है. On behalf of this, you have to complete this exercise on your own. Moving on to demonstrative. Demonstrative, this, that, these, those. They are basically used to point out the people and of course the things. जैसे कि this, that, these, those, ये सब क्या है? Demonstrative pronouns है. Now, this is the boy who is the member of the music group. ये वही लड़का है जो क्या है? Music group का member है. These they are more tastier than those in the jar. जो jar में उससे ज़्यादा tastier है. देखिए, what is this tastier? This is a comparative degree of adjective. Moving on to this, demonstrative जो ये pronouns होते हैं, they are placed before a noun. Noun से पहले होते हैं, और demonstrative pronoun is used मतलब it is used of a noun. Noun का use, noun की use के जैसे. I found a feather inside the book. Book के अंदर मुझे क्या मिला? Feather मिला. This is a demonstrative adjective, right? This is the boy who helped the injured puppy. को इसने help किया था. ये क्या है? Demonstrative pronoun है. ये वही लड़का है जिसने मदद करी थी. On behalf of this, again, you have to complete these exercises. Moving on to the interrogative pronouns. Interrogative means asking the questions. They basically ask the questions about noun. जैसे कि why, WH, that is who, whom, whose, which and what. ये सब क्या है? Interrogative pronouns है. जैसे कि who is your partner for the dance competition? आपका कौन partner है? Question mark आ गया है. Which is the tallest building in India? में कौन सी tallest building है? This tallest is the superlative degree of adjective. और interrogative adjective जो होती है, it is placed before a noun. Noun से पहले place होते हैं, और interrogative pronoun जो होते हैं, it is used in place of a noun, right? Which bag is yours? कौन सा बैग आपका है? Which is your bag? आपका कौन सा बैग है, right? On behalf of this, again, you have to complete these exercises on your own. Now moving on to the reciprocal pronouns. Reciprocal अपने आप में ही नाम होता है कि there is a relationship, right? Reciprocal relationships, they are known as reciprocal pronouns. जैसे कि each other, one another. देखिए, when we are talking about one another, means we are talking, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ और किसी ऐसे बंदे के बारे में बात कर रही हूँ जो मेरी फैमिली से, मेरे सर्कल से बिलोंग नहीं करता है, राइट? एंड ईच अदर मीन्स हम आपस में बात कर रहे हैं. Each other is used for two people and one another is used for more than two people. Yes, right? We give gifts, each other gifts in exchange. हम लोगों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए. The opponents are blaming one another for the culprit. वो culprit के लिए मतलब जिसने गलती करी है उसको क्या कर रहे हैं? एक दूसरे उसको blame कर रहे हैं. Moving on this, you have to complete these exercises on your own. Now moving on to distributive pronouns. Distributive pronouns, they are used to talk about the people or things अबाउट इंडिविजुअल मेंबर. जो कि इंडिविजुअल मेंबर है पेयर का, और यू कैन से ग्रुप का, जैसे कि ईच अदर, नाइदर. ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड दे आर ऑलवेज सिंगुलर, so just take a singular verb. Now each of the pastries has a unique flavor. हर एक पेस्ट्री का अपने आप में यूनिक फ्लेवर है, and we can appoint neither of these candidates. हम इनमें से किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते, राइट? ऑन बिहाफ ऑफ दिस यू हैव टू कंप्लीट दीज एक्सरसाइजेस. नाउ मूविंग ऑन टू दी indefinite pronouns. Indefinite pronouns वो होते हैं जो definite नहीं होते हैं. They basically refers to the persons or things in a general way which are not something very particular. They are referred to as indefinite pronouns, right? Indefinite pronouns are all, some, another,
anybody, anymore, one, anything, everyone, anything, few, many more, several, somebody, somewhere, and someone, right? One must keep one's promise. देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा पेपर में एक एरर आता है, पेपर में ऐसा लिखा होता है वन मस्ट कीप हिज प्रॉमिस, राइट? और वो पूछते हैं जस्ट फाइंड आउट द एरर, तो पीपल, चिल्ड्रन यूजुअली डू दीज काइंड ऑफ मिस्टेक, वन के साथ हमेशा वन ही आता है। प्लीज कीप इन माइंड दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एडिटिंग दिस सेंटेंस, दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंस जिसमें वन के साथ वन ही आएगा, ऐसे सेंटेंसेस बहुत आते हैं। एंड दे यूज टू आस्क दैट व्हाट इज द एरर इन दिस, राइट? नोबडी आंसर्ड माय क्वेश्चन, किसी ने मेरे आंसर क्वेश्चंस का आंसर नहीं किया है। So, on behalf of this, you have to complete these exercises. Now, moving on to the relative pronouns. Relative pronouns basically क्या show करते हैं? ये shows नहीं है. This is shows. Just correct this. It shows the relationship between noun and the words which is following it in a sentence. उनको हम relative pronouns बोलते हैं and it is used to join a phrase or a clause with one sentence. मतलब sentence में phrase और clauses को join कर लेते हैं, जैसे कि who, whose, whom, which. These words ये क्या है? Relative pronouns. जैसे देखिए अगर हम who, whose और whom के बारे में बात करेंगे तो वो persons के लिए होगा। जैसे yesterday I met the achieved I met the achieved who designed the building. जिन्होंने building design की मैं उनसे मिला हूँ। The man whose house you are buying is my neighbor. जिनका घर आप buy कर रहे हैं वो कौन है? मेरे पड़ोसी हैं। The guest whom you met at the party, they are from Canada. We all know Canada. यहाँ पे Canadian dollar चलता है। I think its capital is Ottawa. Please learn all the Asian countries' capital and currencies. Moving on to which is basically for the choice. Animals or thing के लिए. The snake which bite the boy has been caught. जिस snake ने boy को काटा था वो पकड़ा गया है. And the car which they bought वो बहुत ही ज़्यादा कैसी है? महंगी है. It's very expensive. That is used for both persons as well as things. I met that the people that I met, they on the way जो रास्ते में मेरे को मिले थे, they were very friendly, very jolly natured, and this is the book that my friend gifted to me on my birthday, right? So what is used as a relative pronoun whereas refers to things only, चीजों के लिए यूज होता है, right? Now we cannot find what you need, हम नहीं find out कर सकते हैं आपको क्या चाहिए, and you got what you deserve, जो आप deserve करते हैं आपको वही मिला है। Sometime as भी use होता है relative pronoun के बाद, relative pronoun में, because it comes after the word same or such, जैसे कि solution to this problem is same as the solution to that problem or to your problem. He is such a man as I respect. मैं उनकी बहुत respect करती हूँ, वो ऐसे इंसान है। On behalf of this, then you have to complete all these exercises on your own. So that was all about pronouns and their kinds. Please go through that, all these kinds of pronouns, and try to write down all the rules that you have studied, and try to learn that table, that I you mine वाला table जो है जिसके अंदर possessive case बना हुआ है. Please learn this table by heart and keep doing hard work for your examination and stay blessed.